Not every child is equally good with emoting and regulating their emotions. During these times that we all are going through, every child is finding it next to impossible to stay calm. But if they learn to do it, it is going to go long way. Let's learn how to stay calm during these difficult times through mindfulness. Not every child is equally comfortable in regulating his or her emotions. They are not equally good at emoting their emotions as well. Especially during these difficult times, every child is struggling to remain calm. Today, let's talk about how we can help our children remain calm. The way every child has his or her way to regulate emotions, to understand things around. They have their own ways of dealing with and coping up with these emotions. For some children, these emotions can be as easy as dealing with laughter and crying. On the other hand, for some children, dealing with certain emotions can be very, very difficult. But as a parent, we cannot give up. We have to be there, we have to help them to cope up and remain calm. इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, वो है उनका डाइट. पहली चीज़, आजकल बच्चों में पानी को लेकर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है. चिल्ड्रन डोंट ड्रिंक वाटर, दे डोंट रिमेन हाइड्रेटेड, एंड दिस इज वन मेजर सोर्स ऑफ स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी एंड वेरियस अदर प्रॉब्लम्स इन देयर बिहेवियर. इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट दे शुड remain balanced, hydrated and have water, and not to have too much of energy drinks. बच्चे they consume a lot of energy drink in their milk, and they eat also. I've seen children eating energy bars and all. Control that, and you will see that they will calm down in their behavior. एक तरफ डाइट है और दूसरी तरफ है जो चीज़ उन्हें काम करने में मदद करेगी, उनकी पसंद. What do they like to do? Do they like coloring? Do they like dancing? Do they like listening to music? What is their way of venting out when they are angry? आप उस पर काम कीजिए, हेल्प कीजिए बच्चों को टू फाइंड आउट व्हाट इज देयर वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स अराउंड देम. अगर उन्हें कोई भी अपनी सेफ जोन दिखती है तो उन्हें रहने दीजिए. इट इज ऑलवेज सच अ ग्रेट हीलिंग व्हेन चिल्ड्रन नो what they like doing, so they emote their expressions through coloring or dancing or singing or various other activities that they want to indulge into. Let them help them to cultivate a hobby. Let them cultivate a habit of venting out through different ways, through different creative activities, and you will see a change in their behavior. Diet के बाद और उनके अपने स्पेस के बाद जो तीसरी चीज उन्हें काम डाउन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो है पेरेंटिंग. आप कितना क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, बहुत सारा अनकंडीशनल प्यार करते हैं, टेडी बेयर हग्स देते हैं. ये सब चीज़ें लॉन्ग वे में उन्हें बहुत हेल्प करती है, बहुत दूर तक जाती हैं और बहुत मदद मिलती है बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने में. जब उन्हें एक बहुत सिक्योर जोन मिलता है अपने पेरेंट्स में, जब उन्हें एक दोस्त दिखता है अपने पेरेंट्स में, तो वो बहुत जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, सोसाइटी से ज़्यादा होता है. अ चाइल्ड ट्रस्ट his or her parents more than anybody else in the world. And the fourth thing which is going to help you is mindfulness. You practice mindfulness and make your children practice mindfulness, whether it is observing a plant, observing a pet, appreciating nature through mindful seeing, or you are indulging into mindfulness eating habits, or just practicing mindfulness breathing. Mindfulness is going to be of real help in these difficult times. Practice mindfulness and you'll see that your children are becoming calmer day by day. I hope आज की जितनी सारी बातें और जितनी एक्टिविटीज हमने डिस्कस की वो आप अपने बच्चों को करने में मदद करेंगे. I will see you next week. Till then, be mindful.